And this is presently Asia's largest rural tourism festival that is happening. So as our father of the nation says that India lives in our villages. Yes, sir. And if from the developmental sector, if our village wisdom, if our rural wisdom, if our rural skill is not recognized at the national level, that means we are missing on something. So this is basically a movement that we are doing. Hello, 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 hello. Heart. Sunday heart. So good morning friends, we are here with Sir
Raj Basu, who is our father in terms of rural tourism. So he has given us this opportunity called the Orange Festival. Let's talk about the Orange Festival with our very own Sir Raj Basu. Thank you very much. This is the 5th Himalayan Orange Tourism Festival. Yes, sir. And by this 5th year, it has grown to more than 850 villages from across the region of eastern Nepal to Sikkim to North Bengal and going up to Arunachal Pradesh through Bhutan up to the Myanmar border. So Nepal to Myanmar border, we have more than 2,800 homestays which have come over here. More than 1,700 rural products, including from fruits to different kind of pickles to different kind of handicraft, handlooms, everything has come over here. We have almost close to 900 different cultures which has come from this entire region over here. This has now become a hub for development, and this is presently Asia's largest rural tourism festival that is happening. And a lot of people in Calcutta, because in these 3 days we expect that there will be almost 1 lakh plus footfalls over here. Yes, sir. A lot of them who have already been to our different homestays, they come to meet them as their relation, they come to know about new products. At the same time, there are people from the tourism fraternity, from the tourism and hospitality industry. There are people from the development sector, from the government, from the non-governmental sector, who come to study the model of celebrating development. So this we are proud, all of us, because this is, though Association for Conservation and Tourism is the umbrella organization doing it, but this entire fair, this entire festival belongs to the people who have come over here. So this 3 days you can see from the stage to the stalls to all the discussions, and the consciousness is gone back to the villages in the Himalayan area, especially in the eastern Himalayan area. Okay. So I have got one question to Sir Raj Basu, is that you have been doing all these things very selflessly. So may I know the reason, like what gives you the boost or the energy to do such thing? See, it has been very tough for us to be free as India. To get the freedom from the colonies was very tough. So after getting this freedom from the colonies, we thought, because as our father of the nation says, that India lives in our villages. And if from the developmental sector, if our village wisdom, if our rural skill is not recognized at the national level, that means we are missing on something. So this is basically a movement that we are doing, where we want our rural consciousness, our rural skills, our rural traditions, our rural heritage, for the city people to learn from it and to find their classrooms of sustainable learning in our villages. Wow. That's a really motivating words by our very own Raj Basu Sir. So on behalf of our all team, I would like to thank Sir. Thank you. Hello, namaste guys. So we are here at the Orange Festival here in the city center. So let's have an introduction. My name is Praveen Rai, and हम यहाँ आए हैं कलेम डिवीज़न से, और हमारा एरिया का नाम पड़ता है कोलाखम, जो ब्लॉक 2 डिवीज़न में पड़ता है। वो अभी 2011 से शुरू हुआ है। जो है हम होम स्टे में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लेके आए हैं, जैसे कि आपका प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स जैसे टीज़, आपका वाइन्स, आपका जो जिंजर प्रोडक्ट्स है वो सब लेके आए हैं। कि हमारा कोलाखम आपका NGP से जो ये गाड़ी लेके आप 4 घंटे में आ सकते हैं, 4 घंटे में। तो इसमें आपको शेयर टैक्सी में आने के लिए होगा या फिर शेयर आपको थोड़ा उसमें दिक्कत होगा। शेयर में तो आपको रिजर्व ही करना पड़ेगा। रिजर्व गाड़ी लेके आपको वाया गोरबाथन होके ये रूट लेके आपको लावा होते, फिर लावा से आपका 8 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। सो ये आपका जो कोलाखम है, तो इसमें क्या क्या चीज़ है देखने के लिए? देखने के लिए आपका ये है कि कोलाखम में आज सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि हम लोग नेशनल पार्क का बॉर्डर में रह रहे हैं। तो आपका नेशनल पार्क, आपका पूरा जो रूट आएगा नेशनल पार्क के अंदर होके आप कोलाखम एंट्री करेगा। तो एंट्री करने के बाद में आपको साइट सीइंग के लिए एक जगह है, वो है छांगे वाटरफॉल्स, जो नॉर्थ बंगाल का सबसे हाईएस्ट भी अभी तक काउंट हुआ है। तो हाईएस्ट वाटरफॉल है, उसी के लिए लोग साइट सीइंग के लिए आते हैं, और बर्डिंग के लिए भी लोग ट्रैवल करते हैं। क्योंकि नेशनल पार्क, हमारा जो नेशनल पार्क है वो ऐसा है कि एरिया आपका नेवरा से
जब ये विंटर्स होता है आपको टोटल न्यूरा में मोर देन 300 टाइप्स का बर्ड आपका वो किया हुआ है, मतलब रिकॉर्ड किया हुआ है। मोर देन 300 टाइप्स का है आपका, वो भी एंडेंजर स्पीसीज जो है वो आपको वहाँ मिलेगा। तो बर्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा स्पॉट है, आप लोग आ सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much. Namaste, good morning. My name is Rohan Subba and I am from Rangeet, Mazuwa. And this festival we are promoting new offbeat destination of Darjeeling, which is called Rangeet Mazuwa. And its nearby areas are like Manivanjang, which is very renowned and famous for trekking towards Singalila National Park. So our place is rich in culture, activity, ethnicity, and some of the most interesting part of our mountain is that we live in primitive living style where we have farmlands, where we culture bamboo and then we produce bamboo products, and we have farmlands and more like of nature and adventure activity in our mountain where we do rock climbing, river rappelling, soft adventure tourism, and something like we are preserving our culture by providing traditional houses as a homestay. And you can join us to this new venture through NGP or by Bagdora or with share taxi or a reserve taxi till Manivanjang or to our Rangeet Mazuwa, or even you can travel towards Darjeeling and you can get share taxi or a reserve taxi service from Darjeeling itself. So see you soon and thank you so much. Have a nice day. नमस्कार, मेरा नाम मनीषा छेत्री है। मैं कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट से तागाथंग विलेज से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी तक वो एक्सप्लोर नहीं हुआ है। वहाँ पे मतलब आप लोग घूमने आएंगे तो आपको कंचनजंगा का रिफ्लेक्ट मिलेगा। एक नेचुरल लेक है, वहाँ पे आपको कंचनजंगा का रिफ्लेक्ट मिलेगा। उसका नाम है मुलखड़ का लेक बोलते हैं हम लोग। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग वहाँ आके हमारा गांव को एक बार विज़िट कीजिए। और वहाँ पे मतलब जितना भी लोकल्स सब गांव का फूड वगैरह मिलता है, आप लोगों का डिलीशियस फूड जो लोकल है सब ऑर्गेनिक मिलता है वहाँ पे। मैं आप सभी लोगों को चाहूँगी कि वहाँ पे आके एक बार हमारे गांव को विजिट कर दीजिए। So, how to reach your place? और आप लोग कलकत्ता से आना चाहते हैं तो आप लोगों को पहले एनजेपी आना पड़ेगा, और एनजेपी से आप लोगों को दो रूट है, एक कालिम्पोंग होके जाना पड़ेगा और दूसरा है कि रंपू होके जाना पड़ेगा, वो कि सिक्किम बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़ेगा। वहाँ पे रंपू होके आप रेनॉक आ सकते हैं। रेनॉक से ऊपर एक आरिटार है, वो भी सिक्किम है, और आरिटार के पास में हमारा विलेज है, गाँव, उसका नाम है तागाथंग। आप लोग वहाँ से आ सकते हैं। और दूसरा रास्ता है कि आप लोग कालिम्पोंग से आएंगे तो पैदोंग और रेसी चेक पोस्ट होके वहाँ से भी आप लोगों को सिक्किम होके ही आना पड़ेगा। वहाँ से आप रेनॉक जाएंगे रेसी से, फिर रेनॉक से सेम आरिटार, आरिटार से तागाथंग। So, इसके लिए आपको क्या गाड़ी रिजर्व करके आना पड़ता है या फिर आपको शेयर टैक्सी मिलेगा? आप यहाँ से एनजेपी से आप लोग शेयर टैक्सी में आना चाहेंगे वो भी आ सकते हैं। अगर आप रिजर्व चाहेंगे तो वो रिजर्व भी मिलेगा आप लोगों को। Thank you so much. थैंक यू। नमस्कार, मैं गुंजन गिंजू, मैं सिटोंग से हूँ। तो सिटोंग ऑरेंज के लिए फेमस है, जैसे ऑरेंज टी गार्डन हुआ, सिंकोना प्लांटेशन, फॉल्स, सनराइज सनसेट व्यू पॉइंट, इस तरह का है। तो आप लोग सिटोंग आने के लिए आप लोग को एनजीबी नहीं तो बागडोगरा से 65 किलोमीटर से, तो कैसे आना है तो आप लोग सर्च कर सकते हैं हाउ टू रीच सिटोंग फ्रॉम एनजीपी, आपका पूरा वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर। आपका सिटोंग में देखने के लिए जगह क्या क्या है? जैसे आल डाँडा लेके जोगी घाट लेक है, वहाँ पर पाइन ट्री, ऑरेंज गार्डन, बहुत सारा देखने को मिल जाएगा आपको। Hello, my name is Rinchenpong and I am from West Sikkim, Rinchenpong. Rinchenpong में देखने के लिए अभी दो मोनेस्ट्री है और एक पॉइजन लेक भी है और एक ब्रिटिश बंगलो, रोडोडेंड्रम सेंचुरी बर्ड्स है वेस्ट सिक्किम। We can visit Chayatal, Hyangthang, West Sikkim. Then after that we can go Singsu Bridge, West Sikkim from there. Thank you so much. दार्जिलिङ सिक्किमतिर यो चाहिँ एस्टाब्लिस भइसकेको कुरा हो।
होइन हाम्रो सबै हामी गरिरहेका छौँ र हामी के सोच्दैछौँ भने चाहिँ मिटिङहरू चाहिँ हाम्रो गाउँ बस्तीमा हुँदै गरौँ हामी जहाँ जहाँ छौँ हाम्रो गाउँ बस्तीमा भयो भने चाहिँ अलग अलग देशको जस्तो हाम्रो एकदम पर्यटन इन्डस्ट्रीको लिडर्सहरू यहाँ नेपालको हुनुहुन्छ होइन उनीहरू नाटाबाट चाहिँ कसरी एउटा कम्युनिटी लिइकन हाम्रो एउटा कम्युनिटी बेस्ड टुरिज्म किन फाइनली प्रमोट गर्ने होमस्टेज बनाउँदाखेरि पनि तपाईँले अलिकति आफ्नो कम्युनिटीको आफ्नो त्यसको घर डिजाइन गरेर एउटा राईको घर एउटा लेप्चाको घर एउटा भुटियाको घर अलिकति डिजाइन भनेर त्यो प्रकारको एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले दिनुपर्छ यसलाई चाहिँ हामी सेभ चाहिँ गर्नुपर्छ नभए खालि पैसा कमाउनुमा मात्रै हामी गयो भने हाम्रो एउटा लेगेसी एउटा हिस्ट्री हामीले हराउँछ र त्यसलाई चाहिँ हामीले सेभ सबैले गर्नुपर्छ जस्तो Hello dosto, so one of my guests is here to meet me and I'm here at the place